people who are not getting this kind of facilities in the name of social transformations, that this is just a discriminatory act of the constitution, and thereafter it comes a rift between two communities. So we have noticed and witnessed that when it comes to reservation, there are two communities are standing against each other. I mean, general caste versus SC/ST caste and OBC caste, right? When you don't understand anything properly, you have your own understanding about it. Caste system has and had never been a part of Hindu value, had never been a part of Hindu values or Hindu social arrangement. It is an ignominy on us. Having a class comprised of many students who are they're the mix, for example, mix of the toppers and the average students and the below average students. So what happens then the weaker students are given some different or some more classes, when they're taught differently, they're taught separately, and then when they're brought they are at par with other students, then they are merged and then they are taught together. So in the similar fashion, if we are helping these marginalized section of the society, then once they have become equal to their counterparts, then they will not be given any special treatment, and this is how the country will be flourishing. This is what is being done by the constitution, and constitution has given this particular benefit for these sections, because somewhere it is willing to uplift those marginalized sections. Why don't we promote Advaita of Shankaracharya? Why don't we advocate Swami Vivekananda's preaching? If we read and promote these scriptures or these writings or the text, I believe 90% of the problems of the countries would be easily wiped out. Ravan, we are here again with a new topic, and this topic is very relevant to today's scenario. If we talk about the reservation, people are always talking about reservation, and we have chosen the same topic so that people will have different perspectives on this particular thing. Because generally, what happens when you don't understand anything properly, you have your own understanding about it. So आज हम बात करने वाले हैं वो है social reform, social system के बारे में बात करने वाले हैं. And the topic for today's discussion is tell me a social transformational, what do you think this caste based system is a social transformational scheme from constitutional perspective? What do you think about it? And just we will go into we will go deeper into the whole conversation once we have explained everything to the audience, so that they will be willing to know more about the topic and they will have some understanding. And those who are well aware of all these things will have some new understandings about the same. So, what do you think about it? Okay, so let's understand this. First, that India is a diverse country, Yeah. right? And it is also the one which is the oldest living civilization, and which is not an easy thing. So we are still surviving. So from Vedic age to modern age, which is the 21st century, our country has undergone transformational changes. Some changes were good, some changes were appropriate, but not to that extent, which we really could appreciate about, right? अब बात यहाँ पर यह है कि जब पुराने समय में वैदिक एज में हम जाते हैं, जब हम देखते हैं कि देयर वर नो एज सच class arrangement, a social arrangement where there were a caste system, and people were all free to accept and to accept anything they want, or to govern their life exactly their according to their wills, right? And there was no restriction on them earlier, right? So this social mobilization was just like very smooth at that point of time, just because of there was no as such pervasive caste system. But as we turn to post Vedic age, we find things are getting little changed, right? And thereafter we started having this caste system in this country. So caste system in the country is all, you can say, a product which is still with us for the last 2,500 years, and it has really left
a scar on our Bharatiya civilization, which is really evil and which has really caused damage to country to that extent where it is very difficult at this point of time how to get rid of this and how to wipe this out from us, as many philosophers and the many Hindu, scientists or Indian scientists have called caste system is just like a blot on the Indian civilization. So this is what is exactly the reality which we are facing, and caste-based system, which you call today a kind of empowerment, is basically uh, a tool of reformation of a certain community which faced discrimination, which faced untouchability, which faced a very harsh treatment from the upper caste people. So, on this way, we try to settle the issues and try to move ahead, taking all the people in the same line. As you talked about this Vedic, age, and you talked about, when we turned from Vedic age to the next, era. So we know that what happened, what was the social, system at that point in time, because there were many people who were oppressed by those who belong to some rich families, right? Who, so there were four Varnas, right? Brahmins were there, and Kshatriyas were there, and then there were Shudras, and then Vaishyas, right? So those who belong to this particular, category, I mean, Shudras, they were oppressed, and they were taken advantage of. They were not given any opportunity. Especially, I'm talking about, those times. But we can see that now from that point of view, we thought that these people now need some kind of upliftment, and then we started having some schemes like, we brought this reservation, and now they are getting advantage of this particular, scheme which we introduced. And this, this was introduced by a constitution, right? But now, this reservation, as we talked about, has now become a problem for many people. They think that it's been a long time since then. Since then, they have been enjoying this particular, advantage, and now, after having enjoyed this advantage for such a long period of time, it should now be stopped, because those who are meritorious are having to suffer because of these people. So they are always, they're always trying it to be abolished by the system. But that was a different era, and now, how do you think that, how can we understand this social system in current, current scenario? Okay, how to understand social system in current scenario? Uh, अगर हमको आज का समय, आज का समाज और सोशल सिस्टम को समझना है, तो हमको बेसिकली इसका ओवरऑल कंस्ट्रक्शन को समझना पड़ेगा, हाउ अ पर्टिकुलर सोसाइटी इज कंस्ट्रक्टेड. सो फॉर दिस, सबसे पहले हमारे जो दिमाग में आता है वो ये चीज आती है कि आसपास का जो वातावरण, एनवायरनमेंट जिसको बोलते हैं सोशल मिलियू, वो कैसा है. ठीक है ना. और अगर ऐसा बोला जाता है कि इफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी इज वेल इक्विप्ड विथ कोऑपरेशन और वहाँ का सोशल वैल्यू भी काफी पॉजिटिव है, तो ऐसा देखा जाता है कि पीपल हैव अ बेटर प्रोडक्टिविटी, राइट. एंड दैट्स व्हाट हैपेंस विद मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज. सो पीपल आर वेरी कोऑपरेटिव इन नेचर, व्हिच इज समवेयर मिसिंग इन दिस कंट्री. तो इंडिया का जो सोशल सिस्टम विच इज बेस्ड ऑन कास्ट सिस्टम, अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो हमें एक चीज मालूम पड़ती है कि इंडियन सोशल सिस्टम विच इज बेस्ड ऑन कास्ट सिस्टम इज अ प्राइमोडियल सोर्स. Primordial source of what actually we face now. Can you be a bit more clear about this primordial source? How can the audience understand it? देखो, प्राइमोडियल सोर्स का मतलब ये होता है कि जो आज का समाज है, ये एक्चुअली में दिस इज नॉट व्हाट एग्जैक्टली नाउ. इट इज बेसिकली अ प्रोडक्ट ऑफ व्हाट हैज बीन फॉर लास्ट thousands years, right? So it's a complete result today that we are having. तो प्राइमोडियल सोर्स सोशल कंडीशन कास्ट बेस को इसलिए बोला जाता है कि जो भी कंडीशन, जो भी सिचुएशंस we are facing, whatever the situations we are facing, which is in perpetuating nature, it is just because of the caste system. It is just because of the caste which were imposed on us. Because if you go back to Vedic age, there was no such caste, arrangement. Okay, social arrangement based on caste system. लेकिन उसके बाद से देखा जाता है कि धीरे धीरे we converted into this particular hierarchy, graded equality, which we call graded equality, right? तो अब उसके बाद प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि आज जब समय है, ये हम इस सारी चीजों को हम समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो हमें ये लग रहा है कि हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस. अब ये तो सीधी सी बात है कि जो पुराने समय में हुआ है उसका रिजल्ट आज हम सब कुछ है.
ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको इतिहास को भी थोड़ा समझना पड़ता है, और जो हम लोगों ने वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट ऑन दिस इशू। तो प्राइमोरियल सोर्स सीधे से सीधे मतलब ये होता है कि क्या एक्चुअली में सोशल जो हमारे कास्ट बेस्ड सिस्टम है वो किस तरीके से प्राइमोरियल सोर्स का काम करता है। मैं छोटा सा एग्जांपल के साथ समझाना चाहूंगा। टुडे वी हैव मल्टीपल कास्ट इन द सोसाइटी, Yes. and what is with this multiple caste is that they have their unique identities. They have their unique inspirational figures. You can call them, they are living in closed communities. So in this way they separate themselves from other communities. So that's how we are being divided. So division within the society. तो जो डिविजन विद इन द सोसाइटी जो बात करते हैं हम आज, जो विभाजन है समाज के अंदर, वो बेसिकली आज का नहीं है, वो बेसिकली कास्ट बेस्ड सिस्टम से ही चला आ रहा है। ठीक है ना। तो आज अगर कोई ओबीसी से आता है, सो ही विल बी टॉकिंग अबाउट फूले, महात्मा फूले। इफ समवन इज कमिंग फ्रॉम ब्राह्मण कम्युनिटी, ही विल बी टॉकिंग एंड रेलिशिंग अबाउट परशुराम, right? If someone comes from Kshatriya, he would be talking about their own particular, inspirational, motivational figures. That's how we divide within the community, and therefore I'm really, really, I think, overwhelmed with this very idea that if we continue to behave in this way, it's really likely that we can be made soft target by our hostile neighbor, and that is what is happening. तो जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये समझने वाली बात है कि हमको कास्ट सिस्टम को पहले एक पर्टिकुलर सेपरेट एंटिटी की तरह नहीं समझना पड़ेगा। वी शुड नॉट अंडरस्टैंड कास्ट सिस्टम एज अ सेपरेट प्रॉब्लम, rather we should be dealing it with something as a primordial source which leads to different problem to face. For example, caste system पहले आ गया, फिर उसके अलावा क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। For example, who was majorly hit by the caste system apart from untouchables people, apart from one community or two communities? Women, right? So every problem that is starting with women is just because of the caste system prevalent at some point of time, even it is now. तो ये देख रहे हो कि एक प्रॉब्लम से किस तरीके से कोई दूसरी प्रॉब्लम जुड़ी हुई है। अगर हम कास्ट सिस्टम को अलग देखें और वुमेन प्रॉब्लम को अलग देखें तो वी कैन नॉट सॉल्व इट। तो हम लोग को दोनों प्रॉब्लम को एक साथ देखना पड़ेगा और ये डिसाइड करना पड़ेगा कि दिस इज अ कास्ट सिस्टम, and caste system springs out many problems. Now when we talk about women problem, we include several things: marginalization of women, exploitation of women. We talk about their very minimal share in the total economy of the country. They are being depressed already. Domestic violence which is being which is happening on them at various levels, right? They are not being freedom. अब इसको आप किससे कनेक्ट कर सकते हो? इकोनॉमिक से भी कनेक्ट कर सकते हो। You can also connect to economy. If your one segment of community, which is women, which contributes to 50% of the total population of 49 something, is completely debarred from participation or participating into this global economy or the Indian economy, then how we can expect our economy to flourish? So it means we want both male and female, women and men, to be serving together, and it is only possible when we can do something and settle this caste system. Because once the caste system is completely annihilated from the society, we will see a remarkable change, a transformational change in our society right now. And we will be wishing that yes, the women should be also cooperating in the same manner, with the same passion, with the same fervor and intelligence too. तो ये सारी चीजों को हमको इस तरीके से समझना चाहिए। तो मैं एक बात बोलूंगा अपने ऑडियंस से कि कास्ट सिस्टम अपने आप में एक पर्टिकुलर सेपरेट प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, और सारी प्रॉब्लम्स को हमको एक साथ रख के सॉल्व करना पड़ेगा। वो कैसे सॉल्व हो जाएगी? बाय वाइपिंग आउट कास्ट सिस्टम फ्रॉम द कंट्री। यस। ओके, फिर उसके बाद में रिजर्वेशन की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। रिजर्वेशन की प्रॉब्लम ऑब्वियसली, इफ देयर इज नो कास्ट देयर इज नो रिजर्वेशन। सो व्हाट शुड बी गिवन मोर इंपॉर्टेंस, कि कास्ट पर क्या शुड बी गो विद द मेरिट और व्हाट? कि जब कास्ट नहीं रहेगी तो हम किसके बेसिस पे लोगों को सिलेक्ट करेंगे? उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, राइट? या सो द नेक्स्ट थिंग व्हिच वी हैव टू टॉक अबाउट इज, टेल मी व्हाट इज सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स रिलेवेंस इन डीलिंग विद द कास्ट प्रॉब्लम इन इंडिया। मतलब इसका जो कास्ट सिस्टम है उसका रिलेवेंस क्या है इंडिया की जो प्रॉब्लम जो चल रही है उसको डील करने में? हाउ व्हाट इज योर टेक ऑन इट? देखो, इसको ऐसे समझते हैं कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप में एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। And why we are talking about social transformations? Because we have now understood that we need to be governed according to the global norms, not according to the norms which we call norms within the country. Because we have become the part of the globalization, right? Yeah.
Like for example, 1991, liberalization and privatization and globalization took place in Indian economy. इसका मतलब ये है कि हमारी इकोनॉमी लिबरल होगी, हमारी इकोनॉमी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो बाहर की इकोनॉमी थी उस तरीके से बिहेव करने लगी. फॉर एग्जांपल, वी वर ऑल फ्री टू एक्सेप्ट द ट्रेड फ्रॉम डिफरेंट कंट्री एंड देयर वाज नो बाउंडेशन. सेकेंडली, हमारी गवर्नमेंट ने भी एक तरीके से इकोनॉमी से कुछ हद तक हाथ उठा लिया. मतलब इट वाज गिवन टू प्राइवेट सेक्टर्स एंड गवर्नमेंट हैड नो रोल इन स्पेशली मैनेजिंग द सेक्टर्स which were earlier under the public sector units. So that was all based on privatization. That was all based on liberalization and globalization of policies. उसी तरह से आज हमें सोशल ट्रांसफॉर्मेशन को समझना पड़ेगा. सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि आपको सामाजिक सुधार करना है. यू वांट टू अपलिफ्ट सोसाइटी, एंड हाउ वी कैन डू दैट बाय एम्पावरिंग द पीपल विद इन द सोसाइटी. अब जब बात होती है कि पीपल को, सिटीजन्स को एम्पावर करना है, तो फिर वही वाली बात आती है कि कौन कौन सी ऐसी सोसाइटीज हैं, सॉरी कौन कौन सी ऐसी कम्युनिटीज हैं, कौन कौन से ऐसे हैं जिनको हमको अपलिफ्ट करना है, जिनको हमको एम्पावर करना है. तो सबसे पहली बात आती है कि जैसे SC ST, which who faced almost hell like experience for last 2500 years, right? So our constitutions must do something for them. So Article 17, which deals with the extermination of untouchability, can also be seen as a social transformation, because now if anyone is found to be doing any untouchable or any activities promoting untouchabilities or preaching about untouchabilities, then he should be punished accordingly. It is also the part of fundamental rights, right? Social transformation. What we have for the women, we have several acts. Domestic Violence Act. It also means to empower women's conditions at home, especially while they are performing their domestic work, while they are in their matrimonial relationship with her husband. तो इनकी कंडीशंस किस तरीके से सुधरेगी, तो इस तरीके के एक्ट्स को कॉन्स्टिट्यूशन ने धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट किया. तो ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एक तरीके से इस तरीके से देखा जाता है. लेकिन हम लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि द वे वी आर डीलिंग विद दिस सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, it is not just it is not just something which could be understood as an assault on other community. मतलब ये है कि आज जिस तरीके से हम सोशल ट्रांसफॉर्मेशन को समझ रहे हैं कि कुछ कम्युनिटीज सामने आते हैं, वो बोलते हैं इन द नेम ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन गवर्नमेंट इज डूइंग फेवर टू वन कम्युनिटीज एंड दिस इज डिस्क्रिमिनेशन टू द अदर. तो इस तरीके से हम इस चीज को समझना चाहिए. हमें ये देखना चाहिए कि आज की जरूरत क्या है. जितने ज्यादा आप सोशल ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, जितने ज्यादा आप एम्पावर करोगे अपनी वीक कम्युनिटीज को, उतना ज्यादा हमारी इकोनॉमी में, इतना ज्यादा हमारे सोशल स्टैंडर्ड में एक तरीके से एक तक उछाल आएगा. एंड दैट इज व्हाट वी रिक्वायर, isn't it? For example, we want to participate in global race. How it is possible? It is possible only when you can elevate your citizens within your community. Or social transformation is the best scheme. Which when everybody is chipping in, obviously the country, they're contributing to the welfare, to the well-being of the country, then I think the country will definitely flourish. Obviously, because there is the country is now working with double power. I mean, not only one gender is there, and all the other genders also chipping in, and definitely it is going to transform the whole lot of the country. For example, it's like having a class comprised of many students who are they're the mix. For example, mix of the toppers and the average students and the below average students. So what happens then? Then the weaker students are given some different or some more classes. When they're taught differently, they're taught separately, and then when they're brought they are at par with other students, then they are merged and then they are taught together. So in a similar fashion, if we are helping these marginalized section of the society, then once they have become equal to their counterparts, then they will not be given any special treatment, and this is how the country will be flourishing. This is what is being done by the constitution, and constitution is giving this particular benefit for these sections, because somewhere it is willing to uplift those marginalized sections, and this is now the need of the hour, and that's why
The next thing which we have to talk about is, tell me, is Indian Constitution discriminatory on caste related issues towards certain communities? What do you think about it? Is it does it discriminate, especially keeping those few communities into account? Does it ever discriminate? What do you think? डिस्क्रिमिनेशन की बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये बात सही है कि आज के जो समय में रिजर्वेशंस बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज को दिया जा रहा है जो एक नॉर्मल इंसान इसको देखेगा उसको लगेगा कि दीज आर नॉट डिजर्विंग कैंडिडेट एंड गवर्नमेंट इज अननेसेसरली डूइंग दिस इन्वेस्टमेंट एंड विच इज नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस एनीथिंग एज अ लॉन्गर In the इन long द run. लॉन्गर रन, राइट? अब उस कंडीशन में लोगों को ऐसा लगता है, पीपल हु आर नॉट गेटिंग दिस काइंड ऑफ फैसिलिटीज इन द नेम ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशंस, that this is just a discriminatory act of the constitution, and thereafter it comes a rift between two communities. So we have noticed and witnessed that when it comes to reservation, there are two communities are standing against each other. I mean, general caste versus SC/ST caste and OBC caste, right? And it becomes almost a conflict between the two parties or between the two communities, right? तो इस चीज को एक पार्टी इस तरीके से समझती है लेकिन दूसरी पार्टी इस तरीके से समझती है. नाउ वी हैव टू मेंटेन दिस न्यूट्रल perspective on this because we are talking things in the nation interest. Now, first thing which is really important कि आज जब हम समय देखते हैं कि आज जो पूरी कंट्री है, if you look at the population, the demographic, you will find that around 75 to 80% of the populations basically belong to SC, ST and OBC. तो इसके हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आज कम से कम हमें हमारी गवर्नमेंट को इतना करना चाहिए कि कम से कम एटलीस्ट 40 to 50% ऑफ द पीपल मस्ट बी वेल enrolled in some good offices or in some good positions. I'm not talking about that they must be appointed or employed in government offices, but they must be given opportunities to at least demonstrate their talent, demonstrate their ability, or even government should do something to improve their skills. Because आज जितने भी समय आज, for example, we compare ourselves with China, especially on the line of population. But what if the population is not productive? Would that mean it won't mean anything, or it would mean nothing? Because if you have a population and that too reaching to 1.4 billion, but it is not converted into capital, then I think it is of no use. तो हम लोगों को अपनी communities को जो basically बहुत बड़ा पोर्शन शेयर करती है पूरी पॉपुलेशन में, उसको हमें इतना प्रोडक्टिव तो बनाना है कि कम से कम दे कैन गिव अ डायरेक्ट शेयर of their, or they could give their direct contribution to the economic development. And it is only possible when you open up certain rooms for these communities to come and take some advantage, and therefore special arrangements are done. बेसिकली जब भी हम बात करते हैं कि दो कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई होती है, और बेसिकली जैसा कि पूछा कि व्हाई अदर कम्युनिटीज स्पेशली द जनरल कम्युनिटीज कंसीडर रिजर्वेशन एज एन असॉल्ट on them, and it is a discriminatory act of the constitution against the other community. इसको हमको इस तरीके से समझना पड़ेगा कि there is a term called affirmative action. Affirmative action simply means a positive action, which means where we try to integrate one particular section of people into a mainstream work line or workforce. एक ऐसी particular community को हम इस positive affirmative action के जरिए एक मेन स्ट्रीम लाइन में लाने की कोशिश करते हैं, इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं, एक सोशल अरेंजमेंट में लाने की कोशिश करते हैं, जिससे होता क्या है कि इट हैज अ डायरेक्ट कनेक्शन टू इंडियन इकोनॉमी. तो द ट्रांजैक्शनल एक्टिविटीज देन स्टार्ट ग्रोइंग. सो द मोर हैंड्स वी हैव इन पार्टिसिपेशन टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द बेटर द रिजल्ट वुड बी, द हायर द रिजल्ट वुड बी. और इट इज ओनली पॉसिबल when affirmative actions are taken. तो affirmative actions को ही इनको इस तरीके से समझना चाहिए. एक एग्जांपल देना चाहूंगा. एक छोटा सा केस आया था, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, रोयप्पा करके केस था वर्सेस तमिलनाडु का केस है. दिस इज रियली रिमार्केबल एंड अ वेरी माइलस्टोन अकॉर्डिंग टू मी. इसमें ये बताया है कि आर्बिट्रेरीनेस वर्सेस इक्वालिटी. इस तरीके बेसिकली इस चीज को किस तरीके से समझना चाहिए
अगर हम अपने संविधान में जाए, if we go back to our constitution and read article 15 clause 4, 16 clause 4, 16 clause 4 A and 4 B, अगर हम चार आर्टिकल्स को पढ़े तो बेसिकली ज्यादातर जो लड़ाई है, और आर्टिकल 14 बेसिकली जो भी लड़ाई चल रही है, जो बोलते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो रिजर्वेशन दे रहा है वो एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन एक्ट है, वो इन चार पांच सेक्शंस को लेके है। और इस पर्टिकुलर केस में क्या बताया था कि कोई भी गवर्नमेंट, बेसिकली क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन गिवन दिस राइट टू फ्रेम प्रोविजंस, कि वो कोई भी प्रोविजंस को फ्रेम कर सकती है अपने अकॉर्डिंग, किस पर्पज से, टू एलिवेट द स्टैंडर्ड ऑफ women and children. Yeah. Because even the constitution acknowledges the women and the children have been suppressed for thousands and thousands and years. इसलिए हम लोगों को उनको मेन स्ट्रीम लाइन में स्पेशल अरेंजमेंट करने पड़ेंगे। और जो स्पेशल अरेंजमेंट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास पूरा हक और अधिकार दिया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन इस केस में एक क्लियर बता दिया गया था कि इवन इफ अ स्टेट गवर्नमेंट हैज दिस राइट to frame this provisions in the name of special arrangement for women and children, it should not be arbitrary. ये मतलब arbitrary नहीं होना चाहिए, मनमाना नहीं होना चाहिए. It should be based on a particular objective which needs to be accomplished, which needs to be achieved. अगर वो ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है, अगर वो एक पर्टिकुलर जो चीज को ये डिस्क्रिमिनेशन जो बोल रहे हैं, जो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन ला रहे हैं, अगर वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं कर रहा है तो उस पर्टिकुलर एक्शन को एक तरीके से फंडामेंटल राइट को वायलेशन की तरह देखा जाएगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये केस ये चीज समझाता है कि जो लोग ये बोलते हैं कि दिस पर्टिकुलर केस, दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ रिजर्वेशन इज बेसिकली अगेंस्ट द ह्यूमैनिटीज, अगेंस्ट द मेरिटोक्रेसी. It is not against meritocracy. It is all about how to improve the condition of the people, just for the reason that many people could be integrated into the streamline, so that the economy could be boosted up at a rapid pace, faster than before. ठीक है ना, वो पॉसिबिलिटीज लाती है जो ये पर्टिकुलर अपन जो बोलते हैं अफर्मेटिव एक्शन। एक बात और बोली थी इसके अंदर, जो छोटी सी बात थी, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन के बारे में सुना होगा, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। जैसे कि रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन होता है क्या है कि जैसे अगर कोई जनरल कास्ट का है तो उसके नजर में ये ओवरऑल जितनी भी चीज चल रही है रिजर्वेशन, ये रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन के रूप में देखा जाएगा। मतलब एक बड़ी कम्युनिटी ने एक छोटी कम्युनिटीज के ऊपर किसी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया, तो अब कॉन्स्टिट्यूशन उसके ऊपर रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। ये होता है रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, इट्स अ काउंटर अटैक। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियर कर दी है ये वाली बात कि इस तरीके से नहीं होता। और इक्वालिटी का मतलब भी बहुत अच्छे से समझा दे। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि everyone needs to be given equal treatment. No, everyone needs to be given treatment according to the circumstances and the needs. For example, I need to have 2 chapatis, then my need is for 2 chapatis and that should be given to me. If someone has the need of 4 chapatis, of 3 chapatis, or 4 chapatis, then the 4 chapatis need to be given to that person. So according to a particular need and the circumstances, the state government tries to fix this and settle the issues. इसी को बोलते हैं अपन affirmative action। और शायद यही चीजों को पॉलिटिशियंस अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के मैनिपुलेट करके यूज करते हैं और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। So ultimately, we all are looking for some kind of solutions. For example, reservation is there, and now you said that they are being given this chance, and this is how they are going to be promoted, and they're going to be uplifted. But you can see many times riots take place because of this. So what can be the best solution to this, and so that there is no resentment in people, and the problem is also sorted out? How can, in the keeping the constitution into light, how can this be made possible? इसके लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि people must be very well aware of their rights and they should also be aware of their duties equally. And their fundamental duties are to protect the nation interest. Everything they do and perform out of their free will must not be going against
the nation and the sovereignty of the country. And if it goes, I think all your fundamental rights could be seized at the same point, right? तो हम लोगों को बस पहले तो इतना समझना पड़ेगा कि whatever the actions we are going to take, I think it should not be against the national Nation's interest. ठीक है ना? Nation comes first in all way, right? अब next चीज ये आती है कि like you talked how we can minimize such kind of instances. Better education, as I told you, social transformation also means to educate people, and whom we want to educate, the one which has not been registered yet in schools. And if they really don't know and are not aware about of their rights and their duties towards the nation, it is likely that the same people would come tomorrow and would come on the road and do the same demonstrations as what is happening across the globe. What happened in the Nepal. I'm not telling what happened in the Nepal was right or wrong. What I'm telling is that if there is corruption and people are educated, then it is likely They will be raising their voices. Yeah, they will be raising their voice, but वो इस तरीके से voice raise नहीं करेंगे if they are really educated कि that should be harming nation image But at you the see, you global know how much damage has been platform. done, right? Yeah. So this is somewhere going to be this is somewhere going to be quite harmful for the country because somewhere जो damage हुआ है ना वो कहाँ से ये पूरा होगा वो कहीं ना कहीं पे Peaceful demonstration is all permitted in all possible constitutions. No constitution rejects or refuses people to do their peaceful demonstration. People have this option, but Yes. when you go and become a very violent Even Anna demonstrator, Hazare did the Anna same Hazare and was the also a change was peaceful brought. demonstrator. The Yeah. change was brought. Yes. It doesn't mean that he did this peaceful demonstration Yeah, yeah. and it had no effect. It did have effect, and it was seen by everybody. Right? So ये भी हो सकता है. This is how we can maintain the this particular country को हम क्या उसको नुकसान पहुंचाए बिना Right. वो चेंज ला सकते हैं. अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है वो चेंज ला पाना Right. और नुकसान ना पहुंचा पाना. So we have to keep this into account. After all, this is our country, and we all are. We all belong to this country. So somewhere we are responsible for its Obviously. growth and its decline. तो हम ही responsible इसके लिए अगर हम ही इतना नुकसान करेंगे और ऐसा राइट्स वगैरह करेंगे तो उससे अल्टीमेटली ये हमारे ऊपर ही आने वाला है. Right? It will have its own counter effect on us. Right? So the next thing which we have to discuss is tell me, is the religion or the constitution that holds remedial content to permanently weed out caste system from India? ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चंस ये भी हमें बताता है कि किस हमारे पास आज दो ही ऐसे ऑप्शंस हैं जिसको यूज करके हम कास्ट सिस्टम को इस कंट्री से सोसाइटी से पूरी तरीके से हटा सकते हैं. एक तो हमारे पास है रिलीजन और दूसरा है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन. यस. ठीक है ना. अब एक चीज जो बात समझने वाली है कि दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग दैट कास्ट सिस्टम इन इंडिया हैज बीन जस्टिफाइड in some of the scriptures, right? But not in Vedas. In some of the scriptures written in post-Vedic era. We also know that our country is a dharmic country, right? Very highly religious country. And everything that has been mentioned in a particular scripture or the sacred book, I think it becomes a rule for the society to abide by. तो अब उस रूल को हम तोड़ नहीं सकते. So for example, if a particular scripture comes out and says that this has to be an arrangement of the social system based on the 4 varnas, and the least one has to be a serving one to all the 3 communities, then people can't afford the social system to be moving away from this very social arrangement. It would be then considered as a defilement or a disrespect to the scriptures. तो एक चीज तो हमें ये समझ में आ गई यहाँ पर कि जो हमारा रिलीजन है जो धर्म है वो कहीं ना कहीं इस चीज को सॉल्व नहीं कर पाएगा. And we have to be very open minded to really understand this. I'm not saying that our religion cannot do that. Our dharma can really do that, but I'll tell you later on how it could do that. But as far as some scriptures are concerned, if we can take
take examples of these scriptures and we want to settle these issues with the help of these scriptures, I think it is impossible. ये possible नहीं हो सकता. ठीक है ना. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक जो बहुत अच्छा केस है, वो केस का उस केस का था, वो केस, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द केस, बट in that case the judge observed that the caste system in this country should be observed as a social community, not a religious community. अगर आपने कास्ट सिस्टम को एक एज अ सोशल कम्युनिटी की तरह ट्रीट करते हो, दैट इज फॉर द बेटरमेंट. बट अगर आप उसी को एज अ रिलीजियस कम्युनिटी की तरह ट्रीट करते हो, देन इट बिकम्स अ कंप्लीट रिलीजियस प्रैक्टिस. एंड वंस इट बिकम्स अ रिलीजियस प्रैक्टिस, देन इट आल्सो बिकम्स समथिंग व्हिच इज immutable. Which is immutable, which means you cannot raise question against the authority. Right? तो आप उसके अथॉरिटी के अगेंस्ट क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते हो. इसलिए जजमेंट बहुत अच्छा था. इस जजमेंट में यही सारी चीजें बताई थी कि किस तरीके से एक कम्युनिटी को हमको सोशल कम्युनिटी की तरह ही देखना चाहिए, ना कि रिलीजियस कम्युनिटी. तो इस दो चीज से तो हमें ये क्लियर मालूम पड़ गया कि रिलीजन तो धर्म है. रिलीजन स्पेसिफिकली आई विल नॉट यूज द वर्ड धर्म, बिकॉज़ धर्म इज अ लिटिल डिफरेंट टर्म व्हिच वी विल टॉक लेटर. Religion cannot solve this issue. It can only instigate the issue, which we have experienced so far. अब हमारे पास ऑप्शंस कौन से बचते हैं? तो ऑप्शंस तो पहले ये मेरे हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस मेरे को लगता है कि वी नीड टू गो बैक टू वैदिक एरा. I know we cannot bring the era now. It's not possible. It's not possible, but there are some doctrines which we could apply in the current trend and we can really perceive some positive results. मेरे को एक चीज अभी तक समझ में नहीं आती कि why don't we promote Advaita of Shankaracharya? Why don't we advocate Swami Vivekananda's preaching? If we read and promote these scriptures or these writings or the text, I believe 90% of the problems of the countries would be easily wiped out without making extra effort. तो अब छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि इफ यू वांट टू नो व्हाट एग्जैक्टली द कास्ट सिस्टम इन द लैंग्वेज ऑफ स्वामी विवेकानंद, सो व्हाट स्वामी विवेकानंद हैज टू से ऑन कास्ट सिस्टम. वो क्या कहते हैं स्वामी विवेकानंद? कास्ट सिस्टम हैज एंड हैड नेवर बीन अ पार्ट ऑफ हिंदू वैल्यू, had never been a part of Hindu values or Hindu social arrangement. It is an ignominy on us and we have to eliminate it anyhow. So Swami Vivekananda का कहना है ये वाला कि ये कास्ट सिस्टम हमारे हिंदू सिविलाइजेशन का पार्ट है ही नहीं किसी भी तरीके से. अद्वैत वेदांता शंकराचार्य ने लिखे, शंकराचार्य वो भी उनका भी इसी तरीके का कुछ कहना था कि कास्ट सिस्टम हमारे यहाँ का पार्ट है ही नहीं. वी आर टॉकिंग अबाउट द सोल. Advaita means everyone has soul inside them, and there is an unification of that all soul, and that all unified soul are associated and affiliated with the higher soul that is called Brahman, right? So यहाँ पर आत्मा को एक ही बताया गया था. How can a person be perceived different from other? अगर हम बात करते हैं क्षत्रिय की बात करते हैं, अगर हम वैश्य की बात करते हैं, अगर हम ब्राह्मण की बात करते हैं, everybody's soul is going to be merged Obviously in one particular entity, you can say. तो फिर इसमें डिफरेंसेस वगैरह कहाँ से डिफरेंसेस हो सकते हैं? तो ये सोचने वाली बात है कि ये बहुत छोटी सी बात है कि अगर इफ वी कीप कॉलिंग आवरसेल्व्स सुपीरियर टू अदर in the name of caste, then we are really doing this injustice to us, and we are going against the very settled norms of our Vedas. That's why I always say with all my emphasis that we must bring Vedas, our Vedic books or scriptures back in the society and to read about those. It will be really helpful to eradicate all those evil forces which are now prevalent. And if we do that, I think we really could settle this caste-based problem easily from the society. So I think the audience must have got all those important things through this conversation, and the conversation was all about how the social system can be reformed
keeping constitution into Right. account. And this is very possible. If we talk about reservation, it is there for the upliftment of the people, as the way we want every children to be at par with the other children who are doing well in the society, in their educational field. और इसी तरह से हम भी ये चाहते हैं कि जो भी लोग हैं यहाँ पे, जो कंट्री के जितने भी लोग हैं, दे ऑल शुड बी कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ द कंट्री, इकोनॉमिकली भी करें वो, और हर तरह से करें, एजुकेशन में भी करें, हर तरह से करें। एंड दिस इज ऑल पॉसिबल व्हेन एवरीबॉडी इज ब्रॉट इनटू दिस मिनिस्ट्री, राइट? वो जब सभी आ जाएंगे मिनिस्ट्री में, तभी ही ऐसा पॉसिबल है। अदरवाइज कुछ ही सेक्शन, कुछ ही लोग रहें और बाकी ना रह पाए, तो ये कलेक्टिव एफर्ट तो हो ही नहीं Right. सकता। कुछ सेक्शंस के लोग सारे के सारे कंट्री को कैसे ले जा सकते हैं? इंडिया इज नॉट अ वेरी स्मॉल कंट्री। इंडिया इज the biggest country if we talk about population. Right. So we stand first in terms of population. Population number one है, और अगर ये सारी population अगर मेरे सबसे मिलके काम करें, so the day is not far when we may surpass all those richest countries which may consider themselves to be the superpower. Right. I think वो दिन ज्यादा आगे नहीं रहेगा। सो अगर ये सभी लोग इस चीज को ध्यान में रखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया, जो शायद ना लोग इसको छोड़ के जाते, कभी कभी देयर इज अ प्रॉब्लम ब्रेन ड्रेन एज वेल। लोग ना इसको छोड़ के चले जाते हैं ये सोच के कि यहाँ पर ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, पर ग्रोथ पॉसिबल है अगर हमारा माइंडसेट चेंज हो तो, Right. राइट? अगर हम सभी को अपॉर्चुनिटीज की बात देने की बात करें, सो व्हेन एवरीबॉडी इज ग्रोइंग, द कंट्री विल ग्रो इटसेल्फ, Right. तो वो खुद ग्रो होगा। सो विद दिस कन्वर्सेशन आई एम रैपिंग इट अप, एंड आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।